हाय गाइस। सो आज हमारे सिंगापुर का डे 5 है एंड आज हम लोग आए हैं बर्ड पैराडाइज। सो जैसे कि कल हमने ऑलरेडी यूनिवर्सल स्टूडियो कवर कर लिया है, मतलब कवर तो क्या, मतलब सारी एक्टिविटीज़ और अट्रैक्शन तो कवर नहीं कर पाए सेंटोसा आइलैंड में, क्योंकि सेंटोसा आइलैंड इतना बड़ा है कि उसको कवर करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 दिन चाहिए। और फर्स्ट डे को तो हमने लाइक विंग्स ऑफ टाइम और जो सेंटोसा का बीच है एंड एक्वेरियम कवर किया था। कल हमने यूनिवर्सल स्टूडियो कवर किया है और आज हम लोग सेंटोसा आइलैंड फिर से नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, आज और कल का दिन। तो आज हम बर्ड पैराडाइज आए एंड काफ़ी ब्रेड टेकिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि सिंगापुर का जो बर्ड पैराडाइज है अपने आप में काफ़ी यूनिक है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा अभी। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है हम लोगों का। और जहाँ तक रही यहाँ की एंट्री टिकट्स की बात, तो लोकल्स के लिए तो कुछ $40 के अराउंड है, बट ट्रैवलर्स जो लाइक फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके लिए कुछ $50 यहाँ का एंट्री पास है अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो हम लोगों का मिला के कुछ $100 पड़ा। और अभी हम लोग बर्ड पैराडाइज हम जैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट जैसे ही एंटर किया है, एंटर करते ही इतना मैसिव सा वाटरफॉल है यहाँ पे, मतलब देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। टिकट तो ऑलरेडी है ना? हाँ, हमने टिकट्स ले लिए ऑनलाइन। आपके पास है? हाँ, ऑनलाइन परचेज़ किया था। ऑल अमेरिकन फूड। मैं कोकोनट शेक पीऊंगी। मुझे कुछ कोकोनट शेक पीना है। कोकोनट शेक। King penguins spend most of their lives at sea, but when winter ends, they come to land to prepare for the breeding season. They molt, shedding all their old feathers. Without their waterproof plumage, they're unable to hunt in the ocean, so they fast for a month. Oh, sorry.
वेस्टर्न पिपिंग हॉर्नबिल। ऑस्ट्रेलियन सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, एनिमल्स प्लस बर्ड्स। एनिमल्स नहीं, ओनली बर्ड्स हैं। बर्ड्स हैं। लैंड ऑफ पैरेट्स भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये देखो, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दी मिस्टीरियस पेपुआ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर और फैसिनेटिंग बर्ड्स पाई जाती है, जो कि न्यू गिनिया के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। चलिए देखते हैं। निकोबार पिजन्स। सुलू, तुमने ये वाला बर्ड देखा? कहते हैं सदर्न कैसोवेरी। बहुत बड़ा, ये तो एनिमल से कम नहीं लग रहा है। निकोबारी पिजन। सो जैसे ही आप लोग एक बे कंप्लीट करते हैं, जैसे अभी हमने मिस्टीरियस पेपुआ कंप्लीट किया, हर एक बे के कंप्लीट होने के बाद एक रेस्टिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने तरह तरह की बर्ड स्पीसीज दिखा रखी हैं। Now we are going to Songs of the Forest area. अभी हम लोग यहाँ हैं। अभी we will cover this Song of the Forest, then Amazonian Jewels, उसके
उसके बाद हम लोग क्रिम्सन वेटलैंड कवर करेंगे। फिर 2:30 पे हमारा स्काई एम्पी थिएटर में शो है। उसके बाद एक्सप्लैश होते हुए विंग्स ऑफ एशिया होते हुए हार्ट ऑफ अफ्रीका एंड देन विल बी बैक। प्रेस के कपड़े हम लोग गाँव में देना स्टार्ट कर देंगे। हाँ ब्लैक एंड येलो ब्रॉड बिल। सो ये प्रेस करने पे उस बर्ड की हमिंग की आवाज़ आती है, ग्रीन लोरा। एम्पी थिएटर। अब हम पहुंच गए क्रिम्सन वेटलैंड्स। तो ऑलमोस्ट हमने विंग सेंचुरी, पेंगुइन कोव, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, मिस्टीरियस पपुआ, लॉरी लॉफ्ट और अमेजोनियन ज्वेल्स, सॉन्ग्स ऑफ द फॉरेस्ट और क्रिम्सन वेटलैंड्स जो इनके पार्ट्स है डिफरेंट वो हमने कवर कर लिए हैं। और अभी हम लोग स्काई एम्पी थिएटर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोग का नेक्स्ट शो है प्रेडेटर्स ऑन विंग्स 2:30 पे, जो कि लाइक सुना है मैंने यहाँ पे बर्ड्स परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोग वो शो देखने के बाद फिर हम लोग एक्सप्लैश
विंग्स ऑफ एशिया और लास्ट में हार्ट ऑफ अफ्रीका कंप्लीट करके बर्ड्स पैराडाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ में ही इसके नाइट सफारी और ज़ू भी है अगर आप कवर करना चाहते हैं, बट आज हमारी आइटनरी उतना अलाउ नहीं कर रही क्योंकि अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है और अभी हमें शॉपिंग भी करनी है। तो यहाँ से जुरोंग हम लोग निकलेंगे और वहाँ पे एक IMM करके एक मॉल है जहाँ पे सारे ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट है, जैसे चार्ल्स एंड की, कोच से लेके लोकस्टिस, सारे ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पे आपको यूजली 50 to 60% ऑफ मिलता है। तो अभी हम लोग शॉपिंग के लिए इसके बाद जाएंगे। Good afternoon, ladies and gentlemen, boys. अब हम लोग विंग्स ऑफ एशिया देखने जाने हैं। ये सारे बर्ड्स के एग्स के पैटर्न दिखा रखे इन्होंने। Go have. वीकेंड खुले ना बढ़िया तो लोग वीकेंड में बुलाते हैं, घर रहता ना, हमको तो बोलता ना। जान अब विंग्स ऑफ एशिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ओके चलो इनके ऊपर पास जाना इनके बोली
କ୍ୟାବ୍ରେ ଆସିଲେ 6,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମେଟ୍ରୋ ନିଜର ଭାଇ ଆମ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା କାର୍ଡ଼ ଲଗେଇଦେଲେ ମେଟ୍ରୋ ଖୋଲିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ 2ଟା ମାଇକିନା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ सोलू सस्पेंशन ब्रिज चलते हैं। देखो कहाँ पे है? यहाँ पे व्यूइंग टावर है। अच्छा ये वाला? यस इंस्टाग्राम स्टोरी बना दो ना। देखो फिश रखी हुई है खाने के लिए बर्ड्स के लिए। तो हमने बर्ड्स पैराडाइज कवर कर लिया है एंड हार्ट ऑफ अफ्रीका के बाद हमने सस्पेंशन ब्रिज और व्यूइंग टावर भी कवर कर लिया है एंड बर्ड्स पैराडाइज यहीं पे ख़त्म होता है। बट अगर आप अगर आपको नाइट सफारी और ज़ू भी जाना है तो बेसिकली इस एरिया को मंडाई वाइल्ड लाइफ एरिया कहते हैं। तो इसके साथ ही ज़ू और नाइट सफारी का भी ऑप्शन है। हमारे पास तो अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी हमें शॉपिंग करने के लिए एक यहाँ पे काफ़ी फेमस मॉल है जो कि जुरोंग ईस्ट में, जो कि यहाँ से कुछ 15 या 20 मिनट की दूरी पे। तो अभी हमें वहाँ पे निकलना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास टाइम रहता तो हम लोग ज़रूर नाइट सफारी भी जाते और ज़ू भी करते। एंड जो भी मेरे चार्जेस थे बर्ड्स पैराडाइज के वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। एंड क्लूक और अगोडा जैसी वेबसाइट है जहाँ से आप इनकी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन लेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग बर्ड्स पैराडाइज का व्लॉग यहीं साइन ऑफ करते हैं। एंड कल मैं शायद गार्डन्स बाय द वे फिर से जाऊँ क्योंकि वहाँ पे कुछ हमने जैसे क्लाउड फॉरेस्ट जैसी चीज़ मिस कर दी थी लास्ट टाइम, तो वो कवर करेंगे। सो उसका भी व्लॉग मैं बना दूँगा और होपफुली आप देख पाएंगे उसे। बट अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी अगर फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। बाय।